Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम बच्चों मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 5 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है 10 टाइम्स। इसकी हेल्प से इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स देन दैट एट द बिगिनिंग। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1.5 गुना है, 1.5 टाइम। ठीक है, 1.5 गुना है। कैसे निकाले? ओरल लग रहा है क्वेश्चन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज cost of goods sold divided by average stock. This is given as 10 times. Cost of sales is 5 lakh. Average stock निकला है बच्चों 50,000. Therefore, average stock is 50,000. ठीक हो? अब वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 1.5 गुना है ओपनिंग स्टॉक का। सो लेट opening stock is X. Therefore, closing stock will be 1.5x and average stock will be opening plus closing divided by 2, which is हमने पहले कैलकुलेट कर लिया 50,000। ठीक है ना? सो 2.5x by 2 is 50,000 and x equal to 40,000, राइट। और x हमने क्या एज्यूम किया? ओपनिंग स्टॉक। देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 40,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। उसने हमसे क्लोजिंग पूछा, ओपनिंग तो निकलना ही था, उसी के हिसाब से क्लोजिंग निकलना। तो फॉर्मूले को बैठ के फिगर को हम लोग जंबल करते जाते हैं, आंसर निकलने शुरू हो जाते हैं। ओके।